हाय एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है बिकॉज ये वीडियो को मैंने 1 जनवरी 2022 रिकॉर्ड किया था 5 महीने पहले। एंड मुझे नहीं पता इस वीडियो को आप कैसे लोगे, बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ एनीथिंग। और ना ही मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। बट हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्पायर यू, मोटिवेट यू कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग मनी है, एंड मैंने ये दिखाया है हाउ मच मनी आई मेड इन 2021। सो 1 जनवरी को मैंने रिकॉर्ड किया था दैट आई मेड 100,000 प्लस डॉलर इन 2021। ये मैंने खुद के लिए रिकॉर्ड किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी एंड आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट मी एंड माई एजेंसी हाउ मच मनी वी मेड इन 1 ईयर। तो ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था। तो इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये एक मोटिव है कि फ्रीलांस आप एज ए कैरियर चूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्रीलांस ही ज्वाइन करना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप फ्रीलांस ज्वाइन कर रहे हो तो ये कारण नहीं हो सकता है फ्रीलांस ना करने का कि नहीं इसमें पैसे नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ख़त्म हो जाते हैं, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ये सही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल इसे आप एज ए करियर चूज कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी एंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो। और एक बात, ऑल दो मी एंड माई एजेंसी मेड $100,000 इन 1 ईयर, बट आई वॉज नॉट फुल्ली हैप्पी। मैं पूरी तरह से खुश नहीं था। एंड आप इस वीडियो को जब देखोगे आपको पता चलेगा। इस वीडियो का एक और मोटिव ये भी है दैट इन ऑर्डर टू अर्न मनी, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू डोंट नीड टू हैव अ टेक्निकल डिग्री, कुछ अलग स्पेशलाइजेशन नहीं। मैं एक नॉन टेक इंसान हूँ जो इग्नू से ग्रेजुएशन करता है डिस्टेंस से, एंड जिसके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री, कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था। बट हाँ, मुझे कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, अभी भी है। मुझे रिसर्च करने में मज़ा आता है। तो ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू हैव अ डिग्री, बीटेक डिग्री, अ टेक्निकल डिग्री, स्पेशलाइजेशन टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फ्रीलांसिंग। नो, एक नॉर्मल सा इंसान जिसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है ना, आई एम टेलिंग यू, वो भी कर सकता है। 12 पास, इवन 10 पास, यू जस्ट नीड टू लव व्हाट यू डू। मुझे नहीं पता आपकी स्किल सेट क्या है, बट द ओनली थिंग आई वुड टेल यू दैट जो भी आपकी स्किल सेट हो, अगर आपको मज़ा आता है वो करने में, आप अपने स्किल सेट को आउटसोर्स कर सकते हो। एंड आपको अगर मज़ा आता है ना अपने काम करने में, तो यू क्रिएट वंडर, यू नो, आप अपने फील्ड में काफ़ी आगे जा सकते हो। तो डिग्री कोई मायने नहीं रखता, यू नो। तो ये रहा वो वीडियो। Hi everyone, my name is Vikash and I'm a freelancer. Today I'll be talking about how many projects I've completed in 2021 and how I spent as a freelancer in 2021. Today is the 1st of January 2022. So I would like to go back and see what happened to my freelance career. So I'm a freelancer in Upwork and I have a small agency, Autopilot Gig, as you see my screen. So let me go back to my personal profile first. Let me put a filter. January 1st to 31st December. Now let me download CSV. So
So I have completed 15 projects in 2021 from my personal profile, and I have made around 16,862.61. So average I made around 1124.174. So that's my personal profile. Now, as I said, I have an agency. So I'm sorry. Let me filter the date. January 1st. 31st December. Download CSV. So it comes around $83,614.55. And there were 43 projects I have completed in 2021 from my agency profile. Alright, so you've just seen that I've completed 43 projects from my agency profile and around 15 projects from my personal profile, and these are just for 2021. Although I'm doing freelancing for last 5 years, when it comes to money, it's around $100,000 plus I made throughout 2021 itself. Now there are a couple of questions that may come into your mind, and let me try to address them. First, why I'm showing this? Why I'm sharing this? Well, I would like to document everything I do in my life, and it's a part of documentation. I would like to part my journey. I would like to see how my 2021 went. So yeah, it's a part of that. Second, did I set any target? No, I did not set any target to achieve any number, because what I believe, if I would have set any number, I would have ended up with any bad client, any project which I do not like to do. But since I have set a number, so I got to do that. So I didn't do that. But yes, what I firmly believe in setting a target every single day. If you make your today's better, if you target for today, I believe that's the best thing you can do. Now, am I happy? Well, happy has a number of dimensions. But yes, if it comes to money, if it comes to job satisfaction, yes, I'm very much happy as far as money is concerned, as far as job satisfaction is concerned. I am doing what I love to. I am doing what I am good at. So yes, I am loving the journey. But there is one thing, I'm not fully
happy. And there are a couple of reasons for that. Everything I learned from internet, everything I learned from YouTube and other sites, but I am not able to contribute much to the society, much to the world from the place where I learned everything. If you see my social media profile, I hardly put any content. So that part pinches me. I'm not sharing what I've learned so far. I'm not contributing much to the society, much to the world. But yes, I've just started posting couple of things, couple of my learning, and I'll make sure moving forward I'll make it 2x or 3x. I'll post more content. There's one thing. I do not know if I am able to publish this video or not, because there were a couple of incidents where I recorded a number of videos but I never published them. But if you see this video, you know this, I have shown a courage to publish this video. So that's all for 2021 for me, and I'll try to grow more in 2022, and the most I'll try to give more to the society, give more to the world. That's it. Thank you so much. Hi everyone, Vikash again. एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को किसी और सेंस में नहीं लिया होगा आपने, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये था कि आपको इंस्पायर करना, आपको ये बताना कि जब मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा इंसान कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हो। मैंने काफ़ी सारी फेलियर देखी है, मैं खुद फेल हुआ हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में, 29 सालों तक फेल ही होता रहा हर एक चीज़ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, आपके अंदर जो भी डाउट है या जो भी आपके कंसर्न या थॉट है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने फ्रीलांस करियर में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू अगेन, बाय बाय।